Hello everyone, this is Nimit. I'm here back with the Demo 5. Yes. So this Demo 5 it'll be more about how to use summary formulas in your reports. Yes, with the continuation with the how to create reports and dashboard folders for sales and marketing managers. Yeah. So let me just take you forward. But before taking forward with the practical and stimulation of the Salesforce org, right? Obviously, you have to sign up and sign in. Right, that's the first thumb rule. The second thing, just to know about summarize your data in a whole new way. You need to know a few things like summary formulas are a great way to calculate additional totals based on the numerical values in your report. Yeah, so you can add up to five summary formulas to summary and matrix reports to create calculated summary of your numerical fields. Got it? So this is what about you need to know about these things about the summary of your data. So now let me take you to the stimulation. Right. So first of all, in the front of you, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, what you have to do is that you have to click on the reports tabs. जो हमने पहले डिस्कस किया था, यहाँ ऊपर टॉप लेफ्ट हैंड साइड में लोगो है, देन ऐप लॉन्चर है और ये सेल्स एंड सो ऑन. ये आप बहुत सारे जो दिख रहे हैं, जो मेरा कर्सर है, बहुत सारे टैब्स है, तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है. So once you are in the report tab and in the front of you, you have some recent reports, right? So you have to find out opportunities by rep report, जो हमने पहले भी ही create किया था, right? So on this particular thing, or if you see, there are many reports that we have created in many of the demos, right? On the if you can check the third part, right, opportunities by rep, this is a report that we have created, right? We have to go on the right hand side जहाँ पर arrow button है, drop down, इस पे click करना है. Then you would find many options over here. दिखा देता हूँ आपको. Here you would find many options: run, edit, subscribe, export, delete, and many others. Right? You have to click on edit. So once you click on the edit, right next to the opportunities by Rev, so you are here on this. It's called report app builder, right? हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था फील्ड स्पैन क्या होता है, आउटलाइन पैन क्या होता है, फिल्टर स्पैन और प्रीव्यू एरिया क्या होता है, राइट? सो इन दिस यू हैव टू गो बैक टू दी फिल्टर स्पैन. ये रहा फिल्टर स्पैन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आउटलाइन के बराबर ही है. क्लिक करो, राइट? देन यू हैव टू गो ऑन दी अपॉर्चुनिटी स्टेटस. अब जहां ऑलरेडी ओपन था, हमने प्रीवियस डेमो में किया था, ओपन था, हमें यहाँ पर आके क्लोज करना है. सो ये आपका ड्रॉप डाउन, क्लिक करो और इसको क्लोज्ड. Got it? And you have to click on apply. So now you will see there are certain changes happened on the preview pan. यहाँ पर stages काफी open थे, अब यहाँ पर हो गए closed. ठीक है. Now we what we have to do is that we have to add a custom summary formula to display the win rate by sales rep. तो sales rep से क्या दिखना चाहिए कि वो display होना चाहिए जो win rate हो, right? किसमें summary formula के through, right? So what we have to do is that हमें यहाँ पर जाना है outline pan में. ठीक है. So once we are here in the outline pan, so click करते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट? सो यू नीड टू थोड़ा मेंशन थोड़ा करना पड़ेगा जब भी आप काम करोगे. इट माइट हैपन दैट इफ सम ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डू नॉट फिट ऑन योर स्क्रीन, राइट? सो यू कैन डू टेम्परली जूम आउट. आप कर सकते हो via your इंटरनेट ब्राउजर सेटिंग्स ऐप, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे करो या क्रोम पे करो या आप मोजिला, राइट, से करो. सो मैनेज इट, राइट? आपको जूम आउट जूम इन तो पता है, वीडियो कीबोर्ड से शॉर्टकट कंट्रोल माइनस, राइट, कंट्रोल प्लस एंड सो ऑन. ठीक है. So now what we have to do is that now we have to on the outline pan जहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रुप्स, नीचे आओगे ग्रुप्स हो गया, ग्रुप कॉलम्स हो गए, देन नीचे आओगे कॉलम सेक्शंस हो गए. ये कॉलम सेक्शंस है, तो कॉलम के साइड में ड्रॉप डाउन एरो है, राइट? यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड ओवर ये यू फाइंड मेनी ऑप्शंस. ऐड बैकेट कॉलम जो हमने प्रीवियस डेमो किया था, राइट? देन ऐड समरी फार्मूला, ऐड रूल लेवल फार्मूला. नहीं, हमें क्या करना है, ऐड समरी फार्मूला, जिस टॉपिक हम बात कर रहे हैं उस पर क्लिक करना है. So now the pop-up would appear in front of you regarding to edit summary level formula columns, right? So we need to complete few details, right? So over here we need to mention the column name over here. So the column name यहाँ लिख देता हूँ win rate, ठीक है? Example, हम win rate की बात ही करें by sales rep के लिए. And in the description I will just write ratio of 1.
to closed opportunities. I'm good with my typing, man. ठीक है. And now the formula, the next field is at formula output type. So over here you would find many options. So परसेंटेज पे क्लिक कर देता हूँ. परसेंटेज आना चाहिए. ठीक है. डेसिमल पॉइंट यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, तो आई विल पुट एज इट इज 2 ही चलेगा. ठीक है. So over here, what you have to do is that you have to particularly place a cursor in the formula section and complete the details, right? So ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है fields, functions, right? So मैं यहाँ पर cursor क्लिक कर देता हूँ सर्च फील्ड में, and here I would put particularly light one. ठीक है. one पे क्लिक करता हूँ. ठीक है. एंड ओवर इफ यू कम लिटिल डाउन, सो यहाँ पर बहुत सारे दिखते हैं कि ड्रॉप डाउन दिखता है ऑलरेडी, सम देन इंसर्ट एंड सो ऑल. अगर आप देखो सम पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्स, all these formula would be there, right? So I will leave as it is, sum ही करूंगा मैं, right? And probably I would go on insert. ठीक है. So ये करने के बाद आई विल मेक श्योर दैट कि ये आना चाहिए. ठीक है. यहाँ पे ये जो ऐड हो चुका है आपको दिख रहा है जनरल में, आपको वॉन सेमीकोलन सम हो गया है, राइट? नाउ वी हैव टू एंटर क्लोज एज वेल, और क्लोज में भी हमको सम ही करना पड़ेगा, राइट? सो अभी हम लोग इसको सेपरेट कैसे करेंगे? तो आपको ऊपर दिख रहा है यहाँ पर जनरल के वॉन के ऊपर ही जस्ट यहाँ पर बहुत सारे बॉड मास, आई वुड से मैथ्स में हमने पढ़ा है बॉड मास, प्लस माइनस मल्टीप्लाई इन अ डिवाइड एंड ऑल. सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डिवाइड. I'll just click on this. आपको देखो यहाँ पर डिवाइड आ गया. And after that I will go on the again formula field, that is search field, and I'll write closed. Close पे क्लिक करता हूँ. Then I'll come down. Again I'll click on sum only. Sum as it is here. Then I click on insert. ठीक है. तो guys make sure this particular thing जहाँ पर von semicolon sum, then slash closed semicolon, then sum, it should make sure your formula looks like this only. ठीक है. Make sure. And to validate whether this is right or wrong, right, तो नीचे आपको validate का बटन दिख रहा है, right? You have to click on this, valid. So it is valid. अगर valid नहीं होता तो आपको error, अभी error आ जाता. ठीक है. So now we have to click on apply. So now अभी apply हो चुका है यहाँ पर. So at this preview pan, if you could check the preview pan at the bottom, if you'd say हमने पहले भी किया था demo 4 में, that in that you have to toggle off, toggle off the bottom of the preview pan जहाँ पर row counts, detail rows, subtotals, grand total. अब इसमें वो नहीं था, right, stacked summary, but हाँ हमें यहाँ पर off करना है क्या? डिटेल रोज ऑफ. ठीक है. सो जैसे हमने डिटेल रो ऑफ किया है तो देखो सारी चीज और रिलेटेड वो सारे जो डिटेलिंग था वो ऑफ हो गया, राइट? अब उसे लिमिटेड ही सम ऑफ अमाउंट और विन रेट दिखा रखा है. ठीक है. नाउ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेव एज करेंगे सबसे पहले. ठीक है. चलो पहले सेव एज करते हैं एंड विल चूज. सो सेव एज करने के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पर टॉप राइट हैंड, ऊपर टॉप राइट हैंड कॉर्नर में रन है, क्लोज है और सेव है. तो सेव में ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे तो सेव एज आएगा. तो जैसे ही पॉपअप आता है सेव रिपोर्ट एज, सो यू हैव टू एंटर द रिपोर्ट नेम. सो नाउ द रिपोर्ट नेम यू कैन राइट विच यू कैन रिमेंबर वेरी इजीली, राइट? सो आई विल जस्ट राइट, उससे टॉपिक के रिलेटेड ही मैं लिख रहा हूँ मैं. ठीक है. एंड ऑब्वियसली मैं अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ इस फील्ड में रिपोर्ट यूनिक नेम में, तो ऑब्वियसली मेरा यूनिक नेम आ जाएगा. ठीक है. रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन, सो प्रोबेबली हटा के ये पिछले का ही आ रहा है. सो रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, हाउ वेल आर माई सेल्स reps closing. ओके. तो देखो ये चीज आपको लिखना बहुत जरूरी है. रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन ये मैं इसलिए लिखता हूँ कि मुझे याद रहता है कि ये रिपोर्ट किसके रिगार्डिंग है, राइट? डिस्क्रिप्शन में सब कुछ पता चल जाता है. ठीक है ना. तो आप जिसे नीचे आओगे यहाँ पर फोल्डर्स का ऑप्शन आता है, तो फोल्डर में यू कैन चूज एनी फोल्डर्स, बट एज ऑफ नाउ यू हैव टू सेव इट इन दिस पर्टिकुलर फोल्डर, दैट इज ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट्स. यस. ठीक है. तो अब मैं फोल्डर्स की कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा. आई जस्ट क्लिक ऑन सेव. तो सेव करने के बाद नाउ द थिंग इज दैट वी नीड टू रन द पर्टिकुलर रिपोर्ट, राइट?
सो रन पे क्लिक करते ही ये रिपोर्ट हमें ऐसा कुछ दिखता है. यस, द विन रेट, द सम अमाउंट, व्हाट एग्जैक्टली इट शोज, पर टोटल रिकॉर्ड्स कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, विन रेट कितना है. सो आपको पता जाता है. इट इज हाउ योर सेल्स रेप्स आर परफॉर्मिंग, आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्लोज द पर्टिकुलर डील्स. राइट, तो विन रेट क्या है पर्टिकुलर लीड्स का. ठीक है. Guys, this is the small it's a small demo, and it's very important to summarize the formulas in your reports. Reason, ताकि आपकी आप कोई टीम बनाते हो या अपने ऑफिस में जाते हो, कोई टीम ऐसा बनाते हो, आप कोई ऐसा चीज लेकर आते हो जिसमें आपको पता नहीं चलता कोई डील में क्रैक कर रहा हूं, तो मैं मुझे पता क्या चलेगा कि मेरी टीम के लोग क्या कर क्या रहे हैं. और देखो, बिजनेस आना बहुत इंपॉर्टेंट है और पैसा भी आना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वो डील हम कैसे क्लोज करेंगे, उसका एक एनालिटिक्स तो होना चाहिए, एक रिपोर्ट तो होना चाहिए, डैशबोर्ड. Yes. So guys, go follow karo. I would say like and subscribe as well. So this would help you a lot, right? As an individual, right? You can add, your अपना राशंस भी ऐड कर सकते हो, ग्रोसरी भी ऐड कर सकते हो. ऐसे नहीं कोई बिजनेस ही पार्ट होगा, जो घर की चीज है वो भी आप डाल सकते हो. So guys, this is very important. Practice karo. It's a very small thing. Practice as many times and keep loving Salesforce.